Hello. Don't leave the meet. Please join. Am I audible to you? Hello. Hello. Yes, ma'am. Okay, we will start. Okay, screen is visible to you, right? Yes, ma'am. Yeah. Just that the college LAN goes off and connected over the Wi-Fi. Okay, so we will start. In the last lecture, we have completed the various tokens. Just a quick revision. We have learned what is keywords, the reserved identifiers of the program, identifiers, that is programmer's variable name, different types of constants whose value doesn't changes during the execution of program. We started the basic data types in C++. Among that, we completed the first two types, built-in types and user-defined data types. Built-in data types, integral, floating, and void. Integral floating, different combinations, and their sizes in bytes. Type void, it uses among this the two you are familiar with. Return type, when it is not going to return any function, any value. So the return type of function can be written as void. Second, empty argument list denoted with void. And third, use of void in the declaration of generic pointer. We started with user-defined data types. In that, we learned the differences between structures and union. So the basic thing that you must remember about the structure and union is that how they are allocated memory space inside the memory, how its members are getting allocated. The main point is of, though they are similar with concept, but the only difference is of the structures members are allocated distinct memory locations and union members they share common memory space. And size of structure object is equal to the sum of individual sizes of the member object. Size of union object is equal to the size of largest member object. And that we have already seen with the examples. We started the user defined, then the next was after structure and union class, the third user defined data type, which we have already learned in much detail in the second lecture. Okay, so
Next, we learned the fourth user-defined data type, enumerated. And in this, we have studied that what is the difference between enumerated data types of C and C++ is that whenever we declare such enum data type in C++, it returns and becomes a new data type in C++. And hence, we are able to declare the new variables of such type, like shape ellipse, a new variable declared of the type shape, which is already declared as an enum data type. And what is the main use of the enumerated data type is that the list of words gets assigned with the numbers, and hence they behave as a symbolic constant in the program. So automatically they are assigned with the value 0, 1, 2, and so on. We can override these values with our own values by just writing in front of them equals to and the value we want to give it to. Always the next word will be having the +1 value than it's the predecessor. The system is kind of slow. Okay, we have already learned the program of the enumerated data type where we checked whether every enum word is getting assigned the code that we say that by default they are getting assigned 0, 1, 2, and so on. So we cross-checked in this program, and we have already tested this program on the online compiler. Next, we started derived data types. I hope you have the diagram of built-in basic जो basic data types की diagram है वो आपके पास draw की है, तो आप उसमें से one by one उसे revise करते चले. We learned about the arrays, the basic syntax, and what is the difference between C array and C++ array is only of when we initialize the char array, we have to give the +1 size. But in C, you just have to give the exact length of the string constant. We learn the second derived data type, functions, and which has undergone many changes, and that you will learn when you will actually implement those in program. So for now, just remember that functions is a second derived data type. Third, pointers. Okay, from here we will continue. So in the last lecture, I just introduced to both the classes what is basically a pointer, which is a variable that holds the address of some another variable. And we have already explained this example that how p is a pointer variable which is holding the address of the another variable. What is that another variable? It is x, who's having the value 10. And this is how we create the pointer variable, and this is how we assign the address of another variable into the pointer. In C++, you have to learn the three types of this derived data type. Now, the third derived data type, that is pointers, in C++ is exclusively used for memory management and polymorphism concept. Now, what is the concept? See here, constant pointer, pointer to a constant, and constant pointer to a constant. Let's look at them with the help of example. See, students, I'm going to take the same example in all the three so that you will understand the difference more clear. Constant pointer. It is a pointer that is initialized with an address and cannot point to anything else other than that address. So we cannot modify the address the P1 is initialized to. Okay, here see the syntax. How do you write constant pointer? Type of pointer, star symbol, then you have to write const and the name of the pointer. देखो कांस्टेंट पॉइंटर वो होता है जो कॉन्स्टेंटली एक ही एड्रेस पे पॉइंट करते रहेगा, तो उसका आप एड्रेस चेंज नहीं कर सकते जहां वो पॉइंट कर रहा है, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली पॉइंटिंग कांस्टेंट पॉइंटर. अब जब आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? उसका डेटा टाइप, उसके बाद स्टार, और क्योंकि ये कांस्टेंट पॉइंटर है तो पॉइंटर का नाम आने से पहले यहाँ आपको कॉन्स्ट लिखना है, CONST. उसके बाद हम उसे कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं. जैसे ये कैर टाइप का कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमने यहाँ एक स्ट्रिंग कांस्टेंट प्रोवाइड किया है. Let's look at this example कि what is valid with this, what can be done with this pointer, what cannot be. See, आपको example से clear होगा. Int a is equals to 3, int b is equals to 7. Okay, two variables I have declared of the data type int.
Now see, int star const p1 is equals to ampersand a. Now by looking at the syntax, I can see that p1 is a constant pointer. Now p1 is holding the address of the variable a, means it must be pointing to where the value 3 is stored. Now we cannot change the address in p1. Why? Because this is a constant pointer. Let's check it out. If I write p1 is equals to ampersand b, your program will give you warning and error that it is only a readable pointer. Means you cannot make it to point some other variable. आप लोगों को समझ में आ रहा है? p1 सिर्फ a को ही पॉइंट करेगा, मतलब a का ही एड्रेस होल्ड करेगा. अगर आप p1 को बोलोगे कि b का एड्रेस होल्ड करो, so this statement is going to give you error because this is a constant pointer. So it cannot point to anything other than a once it is being initialized with a's address. अगर आप लिखते हो a++, then yes, you can change the value stored at this pointer. आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इसका एड्रेस, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया, तो ये जो 200 वैल्यू है ना, ये चेंज नहीं होगी. हालांकि x की वैल्यू 10 से 11, 12 हो सकती है कांस्टेंट पॉइंटर के केस में, लेकिन 200 एड्रेस चेंज नहीं होगा. That is the meaning of not getting changed the address. If you write a++, no warning. If you write star p1++, इसका meaning क्या है? The value stored at p1. Okay, star p1 means value stored at p1. If you apply the increment operator, again it will give no warning. So what you can do with the constant pointers is, you can change the value stored at, but you cannot change the address it is pointing to. Okay. Pointer to constant. As you can see, the name pointer to a constant means a pointer to one which one cannot change the value of variable it points to. It is known as pointer to a constant. इस केस में क्या होता है कि ये जो पॉइंटर है ना, ये सिर्फ एक जो जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, उस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकेंगे. ठीक है. However, you can change the address they point to, okay, but you cannot change the value kept at those address. इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप उस पॉइंटर को बोल सकते हो कि कहीं और जाके एड्रेस होल्ड करो, लेकिन वो जहां पहले पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर. Let's try to understand this. This is the syntax. Type of pointer, constar, name of the pointer. See, when we write pointer to a constant, तो क्योंकि आपका डेटा टाइप जो है ना, यहाँ पे जो आप डिक्लेयर कर रहे हो, ये आपका constantly point करेगा उस वैल्यू को, so that value is not going to change, and hence you have to write here int const before declaring the name of the pointer star p2. So type and then const and then star p2. So simply the name will come here, but after the data type you have to write what? Const. That this is a pointer to a constant. This is a pointer to a constant type of integer value. Okay, this is a pointer to a constant type of integer value. Now see here, let's look at the example. Int a is equals to 3. Now I have declared in const star p1 is equals to ampersand a. Now when by looking at the syntax, you can say that p1 is a pointer to a constant. Now what we say that you can't change the value at a with the help of pointer. This is the meaning of the statement. So cannot change the value at that address. See, if you do a++, means simply by with the help of a, if you try to change this value, it is possible. But if you try to change this with the value of star p1, मतलब p1 जिसे point कर रहा है उसकी value 10 करो, so this is not valid. If you try to change star p1++, it will give you warning. What you are trying to do is you are trying to change the value pointed by this pointer. Value stored at the address it is pointing to, value stored at this pointer, तो वो change नहीं होंगी with the help of p1. However, you can change directly with the help of a++, क्योंकि ये कोई symbolic constant है क्या? नहीं, इसको आप चेंज कर सकते हो. लेकिन अगर आप एक पॉइंटर डिक्लेयर कर देते हो और फिर आप उस पॉइंटर की हेल्प से उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो वो नहीं होगा. That is the thing. Okay, so star p1 is equals to 10, invalid. Star p1++ invalid. However, a single variable with its own name, वो अपने खुद के बेसिस पे वो वैल्यू चेंजेस कर सकता है, लेकिन पॉइंटर यूज करके अभी आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. यू कांट मेक इट 10 from 3. It will be constantly 3.
Okay. Constant pointer to a constant, the third type of pointer. A constant pointer to a constant is a pointer that can neither change the address it's pointing to, nor it can change the value kept at that address. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see here, Yes, ma'am. इस नाम से ही पता, ओके ओके, इस नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ना एड्रेस चेंज होगा ना वैल्यू चेंज होगी पॉइंटेड बाय दैट पॉइंटर. लुक एट द सिंटैक्स. यहाँ आपको कांस्टेंट के पॉइंटर के नाम के सामने भी कांस्ट लिखना है, यहाँ आपको डेटा टाइप के सामने भी कांस्ट लिखना है. दैट इज द चेंज इन द सिंटैक्स. सो व्हाट डज इट से? कांस्ट char star const cp means the pointer is also constant and what it is pointing to, it is also constant. Let's look at the example. Int a is equals to 3, int b is equals to 7. I'm declaring constant star const p1 is equals to ampersand a. Now after declaring this, what does it mean? That what we cannot change the address and cannot change the value at that address which p1 is pointing to. Now what will give you warning? If you try to change the value star p1 is equals to 10, मतलब आप क्या कर रहे हो? p1 की हेल्प से उसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं a की, तो इट विल गिव यू वार्निंग. ये 3 से 10 नहीं होंगी with the help of p1. But if you try to make it with the help of a plus plus, it is going to format it. हाँ, but p1 की help से ये वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं. That is the meaning of being pointer to a constant. Okay, so constant pointer to a constant. What is the second thing? We can't even change the address. Now see, if I try to make p1 to hold the address of b, what is this ampersand? Address operator. So if I try to make it hold the address of b, ये already a का address hold कर रहा है, अब मैं इसको बोल रही हूँ कि जाके b का address hold करे. So this can't be done because this is a constant pointer to a constant जो ना एड्रेस भी चेंज नहीं करेगा और जहां वो पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस उसने होल्ड किया है उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं करने देगा. So that is constant pointer to a constant. Let's summarize this. Constant pointer में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये हम यहाँ टाइप दिए हैं. Can change address and whether we can change the value at that address. So here I have written yes and no. Constant pointer में we cannot change the address but we can change the value stored at that. Pointer to a constant के केस में yes we can change the address but we cannot change the value at that address. Constant pointer to a constant के केस में दोनों चीजें नहीं होती. We cannot change the address, we cannot change the value at that. Okay. So this was the third derived data type. Let's move on towards the last and fourth derived data type, that is reference variables. Now, what is a reference variable? I hope students you are having your copies and pen with you and you are noting down the things when I'm explaining in a quick manner, obviously. क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है मेरे एक्सप्लेनेशन के ड्यूरिंग. Okay, reference variables. Reference variable, as the name implies, it gives an alternative name for the previously defined variable. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो ये क्या है? एक मेमोरी लोकेशन के दो नाम क्रिएट करना. ऑलरेडी एक नाम तो उसको होता ही है, हम एक दूसरा नाम भी उसको असाइन कर देंगे. जैसे अब हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं. आप सभी लोगों का घर पे कुछ अलग नाम होगा, राइट? मे बी सीनू, मीनू, टीनू, एंड एट योर ऑफिशियल नेम, योर कॉलेज नेम इज समथिंग डिफरेंट, राइट? सो आपका कॉलेज में, स्कूल में कुछ अलग नाम है, घर पे आपके पेरेंट्स आपको कुछ अलग नाम से बुलाते होंगे, बट यू आर द सेम पर्सन. तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको हेल्प करेगा ये एक्चुअल टेक्निकल कंसेप्ट ध्यान में रखने में. तो रेफरेंस यानी कि एक पर्सन दो नाम, तो एक मेमोरी लोकेशन और उसके दो नाम. तो ये कैसे करते हैं और ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक टर्म के लिए मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं. जैसे इनकम, कोई कोई सैलरी बोलता है तो कोई इनकम बोलता है, ठीक है? उसके बाद टोटल को कोई टोटल बोलता है तो कोई सम बोलता है. ये चीजें होती है ना. तो ऐसी बहुत से केसेस है और मे बी हमारे जो एंड यूजर्स है वो डिफरेंट टर्म्स यूज कर रहे हो, हम लोग कुछ और टर्म्स यूज कर रहे हैं. तो ऐसे केसेस में हम ये रेफरेंस वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं सो दैट टोटल पे भी एरर नहीं आएगा, तो उसको सम भी बोला तो एरर नहीं आएगा. कोई भी वैल्यू से रेफर करो, कोई भी वैल्यू एक्सेस करो, ठीक है?
तो इस केसेस में हम ये रेफरेंस वेरिएबल यूज करते हैं. Now, a reference variable, how do we create it? Data type, ampersand symbol, reference name is equals to variable name. अब इसका मीनिंग क्या है, एक मैं चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो एम्परसेंट है ये एड्रेस ऑपरेटर नहीं है, ये सिर्फ एक नोटेशन है कि रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए. ठीक है, ये एड्रेस नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रेफरेंस वेरिएबल बनाओ. ठीक है, लेट्स लुक एट द एग्जांपल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली. डेटा टाइप फ्लोट, ये सपोज एक मैंने सिंपल वेरिएबल क्रिएट किया है, फ्लोट टोटल इज इक्वल टू 1500. ये चीज आपको पता है. ठीक है, फ्लोट टोटल इज इक्वल टू 1500. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू क्रिएट, मुझे एक टोटल के लिए दूसरा भी नाम बनाना है, सम. लाकि जब भी लोग सम बोले तो भी टोटल की वैल्यू आनी चाहिए, टोटल बोले तो टोटल की वैल्यू आनी चाहिए. तो मैं कैसे करूंगी, सो फ्लोट एम्परसेंड सिंबल, देन जो नया नाम मुझे देना है वो नाम यहाँ पे लिखूंगी मैं, सम इज इक्वल्स टू ये वेरिएबल का नाम, प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल का नाम टोटल. जैसे ही आप ये चीज करोगे ना तो मेमोरी में क्या हो जाएगा, ये जहाँ स्टोर था 1500 वैल्यू टोटल के नाम से, उसको एक और नाम आ जाएगा सम. टोटल बोलो या सम बोलो, दोनों एक ही जगह पॉइंट करेंगे मेमोरी में. वेरिएबल सम इज नाउ अ रेफरेंस वेरिएबल टू द टोटल. क्या बोलेंगे हम इसको, sum is a reference variable to total, and then sum and total can be used interchangeably, and they will referring the same data object inside the memory. Let's look at how the some more statements. देखो, float total 1500 और ये उसका वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया सम. अब अगर क्या करेंगे, हम सी आउट टोटल प्रिंट करेंगे और सी आउट सम प्रिंट करेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट की वैल्यू आपको क्या मिलेंगी, 1500. Suppose I am giving the value 100 total and I have created the reference variable. तो अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट डालते प्रोग्राम में तो दोनों की वैल्यू 100 आएंगी. क्यों, क्योंकि सम वही रेफर कर रहा है जहां टोटल रेफर कर रहा था. देन टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 10. नाउ दिस स्टेटमेंट विल चेंज द वैल्यू ऑफ बोथ टोटल एंड सम टू 100 110. इससे क्या होगा, अगर आप इसके बाद फिर से ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट डालोगे ना लाइन के बाद, तो फिर से दोनों की वैल्यू 110 110 हो जाएंगी, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन में, एक ही मेमोरी लोकेशन के दो नाम. अगर आप सामने से कुछ जीरो करते हैं तो बोथ टोटल एंड सम क्या हो जाएंगे, जीरो. So now what you can do, you can perform the different operations and use them interchangeably. Okay. And you can create many more references, like you can create the reference to the pointer also, reference variable. जैसे आपको n of 10 10 बार नहीं लिखना है प्रोग्राम में, so simply create x वेरिएबल एज अ रेफरेंस वेरिएबल टू एन ऑफ 10. तो जहां आप x यूज करेंगे उसका मीनिंग एन ऑफ 10 रहेगा. अगर आपको स्लैश एन प्रोग्राम में 10 बार नहीं लिखना है तो यू जस्ट क्रिएट वन रेफरेंस वेरिएबल a. नाउ a इज इक्वल टू स्लैश एन. तो जहां आप a लिखोगे उसका मीनिंग क्या लेगा, कंपाइलर स्लैश एन. बट you will have to write the statement first, then only a will be going to be treated as slash and by the compiler. This is how we create the reference variable. One of the major application of the reference variable is in passing the arguments to functions. Such function calls are known as call by reference. Look at this. This is a simple program. Void f of int ampersand x. Listen, students, this is a symbol which is going to create the reference variable, not an address operator. X is equals to x plus 10. Function is over. I have written int main. Inside, one variable is created with the value 10 and f of m. Let's try to execute this program. Obviously, your execution will start from this point. M is going to be assigned the value 10. So inside the memory, one variable will be created. At this statement, M will be assigned with the value 10 and it will be created inside the memory. Let's move on to the next statement, f of m. f of m जैसे ही call होगा, so
this value is passed as an argument to this argument. तो इसका रिप्लेसमेंट क्या हुआ? int ampersand x is equals to m. int ampersand x is equals to m. ओके, नाउ इसका जैसे आपने int ampersand x is equals to m देखा, तो x और m एक दूसरे के क्या बन गए? एलाइसिस, means x is now reference variable to m. int ampersand x is equals to m. This syntax is familiar to you, right? ये हम क्यों लिखते हैं? जब भी हमें रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना होता है। x बन गया रेफरेंस वेरिएबल m का, तो यहाँ x आ जाएगा जो दूसरा नाम है इस लोकेशन का, which is again pointing to which location? 10. जहाँ 10 stored है उसी लोकेशन का दूसरा नाम। Now what will happen? If you make x equals to x plus 10, so x is incremented, means the m is also incremented. And if you try to print the value of m here, it will be 10 plus 10, that is 20. तो कॉल बाय रेफरेंस मैकेनिज्म में ऑब्जेक्ट्स के जो ये है आर्गुमेंट्स, दे आर नॉट गेटिंग कॉपीड बट दे आर गेटिंग नेम्ड विद सम अनदर नेम। तो जैसे हमने यहाँ पे एफ ऑफ एम का कॉल पास किया तो ये चीज हुई, और इससे क्या हुआ? एक्स और एम एक दूसरे के अलाइसेस बन गए। मतलब इसको रेफर करो, इसको रेफर करो, वैल्यू 10 ही एक्सेस होगी। इसलिए जब आपने x इक्वल टू एक्स प्लस 10 किया तो ऑटोमेटिकली m भी प्लस 10 हो गया, और इसलिए ये वैल्यू 20 हो जाएंगी इन द आंसर। इफ यू ट्राई टू प्रिंट द वैल्यू and if you try to perform this program in the compiler, then and just write down here the statement cout m, the value will be 20. Okay, so this is something different, students. Okay, with the reference mechanism we create two names for one memory location. Let's look at the next concept, that is operators in C++. Attendance आ गई होंगी, just start marking your attendance, don't leave the meet button. Operators in C++. So in C++, number of operators are used from the C, but some of the new operators we are going to see here. The operators involved and the name of the operators are given. Just write down fastly. Among this, the first two operators we have already studied, the insertion operator, okay, which is used along with the cout to print a statement on the screen or any output stream hardware, and extraction operator, which is used along with the cin to get the input from the user. Then this is the scope resolution operator, double colon star, pointer to member declarator. This is hyphen greater than symbol, which is actually an arrow, and then star, pointer to member operator. This is again pointer to member operator. These three with colored green, they are known as member dereferencing operator. इनकी एक कैटेगरी है, ठीक है? इन तीनों को क्या बोलते हैं? member dereferencing operator. Delete memory release operator, new memory allocation operator. इन दोनों को क्या बोलते हैं? memory management operators. Delete और new. Handle line feed operator, set w filled width operator. इन दोनों को क्या बोलते हैं? manipulators. Okay. Let's look at them one by one. The first two operators we have already seen. Let's start with the scope resolution operator. See students, ये दो आपके already explain हो चुके हैं. We will start from here. The scope resolution operator. The two main uses. First, to refer the global version of a variable in a program, and secondly, to define the functions of a class outside of it. इसमें से ये जो चीज है सेकंड वाली, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन योर प्रोग्राम ऑफ क्लास पर्सन, जिसमें हमने अगर आपको याद होगा तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से फंक्शन डिफाइन किया था क्लास के बाहर। तो ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का एक मेन यूज है और ये आप और आगे प्रोग्राम्स में यूज करेंगे ही। लेट्स लुक एट द फर्स्ट यूज। नाउ लाइक C++ is also a block structured language. ब्लॉक्स होना मतलब
डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में हम सेम नेम्ड के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, और उस वेरिएबल का स्कोप जो है ना वो उस ब्लॉक तक ही रहेगा। ब्लॉक मतलब ये जो ओपनिंग करली ब्रेस और क्लोजिंग करली ब्रेस होता है वो एक ब्लॉक हुआ। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम सी प्लस प्लस में भी नेस्टेड ब्लॉक हम यहाँ पे लिखा है मैंने। तो ये देखो, ये पहला ब्लॉक है मेरा, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैंने एक एक्स वेरिएबल क्रिएट किया विद द वैल्यू 10। उसके अंदर मैंने दूसरा ब्लॉक लिखा और उसमें फिर से मैंने उसी नाम के साथ दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया। ये कर सकते हैं हम? यस, हम कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है कि एक्स के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं और दोनों ब्लॉक में उसकी वैल्यू डिफरेंटली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी आप ब्लॉक 2 में एक्स की वैल्यू एक्सेस करेंगे तो इट विल बी लोकल टू दिस ब्लॉक ओनली एंड इट विल बी गोइंग टू गिव यू द वैल्यू 1 फॉर एक्स। अगर आप यहाँ प्रिंट करोगे, चेंज करोगे, तो जो भी चेंजेस होंगे वो एक्स इक्वल टू 1 के लिए होंगे। अगर आप इस बाहर के ब्लॉक में कहीं भी, मीन्स आउट ऑफ दिस, कहीं भी एक्स की वैल्यू चेंज टाइप करोगे, प्रिंट करोगे, तो इट वुड गोइंग टू बी इक्वल टू 10। तो क्या होता है कि जिस ब्लॉक में उसकी वैल्यू जो है वो उस स्टार्ट से लेकर एंड ऑफ द ब्लॉक तक वही रहेगी। स्टार्ट से लेकर एंड तक यहाँ एक्स की वैल्यू 10 रहेगी, लेकिन जैसे ही इनर ब्लॉक स्टार्ट होगा एक्स की वैल्यू 1 रहेगी। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है? ये जो लोकल वर्जन है ना, ये हो गया लोकल वर्जन एक्स वेरिएबल का वहां के वहां। ठीक है, इस ब्लॉक में ये इसका लोकल वर्जन एक्स का 10, इस ब्लॉक में ब्लॉक 1 में, ब्लॉक 2 में एक्स का लोकल वर्जन 1 है। तो सी में ग्लोबल वर्जन ऑफ अ वेरिएबल कांट बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द इनर ब्लॉक। मतलब अगर आप चाहते हो कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर मुझे 10 प्रिंट करनी है, तो ये हो सकता है क्या? सी में ये नहीं हो सकता। आप एक्स की वैल्यू कितनी भी बार यहाँ पे प्रिंट करवा लो, हमेशा 1 ही प्रिंट होगी। If you want the value of x to be printed as 10, means you want to access this value inside this block, then it can't be done in C, but it is possible with C++, and that with the use of this scope resolution operator. See, C++ resolves this problem by introducing this operator and the symbol. Look at this, guys. This is a double colon symbol. Now this operator allows to access you the global version. Just you have to write colon colon and then the variable name. Let's try to understand with the help of example. Look at this. Don't leave the mid till we complete this, or I ask you to do so. Hash include iostream. Obviously, we are going to write the statement. Using namespace std. I forgot to write. Using namespace std. Now see here above the main, I am declaring the variable m equals to 10. Now this is the global value or global version of the variable m. Now inside main, I am going to start with the first block, where inside I have declared again the same named variable with the value this time 20. Inside this again, one more block. Inside this block, I have declared a new variable with the value k is equals to m. Int, अब हम इस ब्लॉक में हैं। इस ब्लॉक में मैंने फिर से m तीसरी बार डिफाइन किया। देखो, मैंने m को सबसे पहले ग्लोबली डिफाइन किया, उसके बाद मेन के इनसाइड पहले ब्लॉक में, और उसके अंदर नेस्टेड ब्लॉक में फिर से 30 वैल्यू 10, 20, 30. Now we will try to print these values. See out, we are in inner block. See out, k is equals to k. What I am trying to print that what value m is holding every time. That's why I'm going to print the inside the inner block all the values k, m, and global m.
अगेन आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, मतलब ये कंप्लीट होने के बाद फिर से मैं m की वैल्यूज प्रिंट करूंगी। ये मेरा मेन एम है। देखो, inside the inner block I have tried to print this value k is equals to, then m is equals to m, and with this symbol, see, ये डबल कोट्स में लिखा मैंने, कोलन कोलन m इज इक्वल्स टू कोलन कोलन m। देखो, जब हमने सिंपली m की वैल्यू एक्सेस की ना, लोकल वैल्यू, तो हमने m लिखा। लेकिन जब हमें उसकी ग्लोबल वैल्यू एक्सेस करनी है, m इज इक्वल टू 10, तो हम लिखेंगे उस वेरिएबल के सामने सिर्फ आपको ये सिंबल डालना। तो बेसिक इस प्रोग्राम का यही है कि जब भी आपको लोकल ब्लॉक में की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो आप वहां सिंपली m लिखो। अगर आपको डायरेक्टली ग्लोबल वैल्यू, मतलब मेन के ऊपर जो डिक्लेयर की है m इक्वल टू 10 एक्सेस करनी है, तो आप उसके सामने कोलन कोलन सिंबल लिखो। तो वो इसका मेन एक ये है कंसेप्ट। यहाँ पे वही किया है प्रोग्राम में। उसके बाद हमने ब्लॉक कंप्लीट कर दिया और फिर से हम इसको एक्सेस करेंगे वी आर इन आउटर ब्लॉक बोल के। That statement will print m is equals to m and colon colon m is equals to colon colon m. So see guys, what is going to happen? We are in inner block. In the output, the statement is going to be printed first. Now k will be printed with the value 20. Why this value is 20? See here. जब मैंने k is equals to m बोला, तो ये पहले लोकल में वैल्यू चेक करेगा। सिंपल m है ये, इससे पहले m की वैल्यू कौन सी डिक्लेयर हुई है, इसके लिए लोकल ये ब्लॉक है। तो ये यहाँ चेक करेंगे, m की वैल्यू 20 है, इसलिए इसने k को m की वैल्यू 20 असाइन कर दी। दैट्स व्हाई k इज इक्वल टू 20। उसके बाद हमने m 30 वैल्यू कर दी, मतलब इनसाइड दिस ब्लॉक m 30 डिक्लेयर होने के बाद अब m की वैल्यू क्या है, 30। दैट्स व्हाई m इज टेकन 30 वैल्यू। उसके बाद हमने लिखा कोलन कोलन m इज इक्वल टू, नाउ दिस कोलन कोलन m, दिस एक्सेस द ग्लोबल वर्जन ऑफ दिस वेरिएबल डायरेक्टली। ये सभी ब्लॉक से बाहर जाके ग्लोबल वैल्यू चेक करेगा एंड दैट इज 10। दैट्स व्हाई इट हैज प्रिंटेड 10। नाउ द नेक्स्ट लाइन वी आर इन आउटर ब्लॉक विल बी प्रिंटेड m इज इक्वल्स टू, अब हम इस ब्लॉक से बाहर है। इस ब्लॉक के बाहर मुझे बताओ m की वैल्यू क्या है, इस ब्लॉक से बाहर क्या है m की वैल्यू 20। नाउ ये एक ब्लॉक है आपका, तो ये दूसरा ब्लॉक। तो इस ब्लॉक के बाहर m की वैल्यू है 20, इसलिए जैसे ही आपने स्टेटमेंट इससे बाहर एक्सेस करने की कोशिश की m की, तो वैल्यू क्या आई है यहाँ पे प्रिंट होके 20 in the outer block. And whenever you are trying to access with the colon colon symbol, again it is going to point to the global version. तो आपको इस प्रोग्राम में एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपको लोकल वर्जन एक्सेस करना है तो सिंपल m लिखो। अगर आपको ग्लोबल वर्जन एक्सेस करना है, दिस वन, तो आपको लिखना है कोलन कोलन, उस सिर्फ वेरिएबल के नाम के सामने आपको क्या लिखना है, ये देखो, सिंटैक्स कोलन कोलन एंड वेरिएबल नेम। So this will make you to access the global version of that variable. So that was the main uses, okay, to refer to the global version of a variable in a program. And secondly, this program we will see, but we have already done one program in the second lecture where we have performed the various programs and using a class person program using class. So in that program already I have told you about that symbol. Let's look at the memory dereferencing operators. Just wait guys for 5 minutes. C++ permits to access the class members, okay, through pointers. Just look at the operator and its function. Most of them we are not going to use in your program, but you must remember the use that through the pointers you can also access the class members. Okay, so ये जो symbol है colon colon star, it is to declare a pointer to the member of the class. This one to access the member using the object name and the pointer. And this symbol to access the member using pointer to the object and pointer to the member. Okay, so not all of them you are going to use, but you must remember the symbol and their uses.
डीरेफरेंस करने के लिए, मतलब जो मेंबर्स क्रिएट किए हैं उनको वापस आप पॉइंटर से एक्सेस करो। क्लास के मेंबर्स मतलब फंक्शंस, ओके, या फिर डेटा मेंबर। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स, देखो सी में जो है ना, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा मैलॉक और कैलॉक। तो मैलॉक और कैलॉक जैसे फंक्शन सी में क्या करते हैं, डायनामिकली मेमोरी अलोकेट करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स किस लिए होते हैं, टू allocate the dynamically memory when it is not known in advance। जब हमें नहीं पता कि कितनी मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय दैट वेरिएबल होगी, या प्रोग्रामर जो एंड यूजर है वो कितनी साइज के वेरिएबल या फिर कितने साइज का क्रिएट करने वाला है, तब ऐसे केसेस में हम ये ऐसे डायनामिकली अलोकेशन करते हैं। तो डायनामिक अलोकेशन एक्चुअली है क्या, कि रन टाइम पे जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब मेमोरी अलोकेट होगी पर्टिकुलर वेरिएबल को, पर्टिकुलर अरे को, या जो भी डेटा टाइप है। तो सी में इसके लिए मैलॉक और कैलॉक जैसे फंक्शंस थे, अलोकेट द मेमोरी। और सिमिलरली एक फ्री फंक्शन था जो फ्री कर डायनामिकली अलोकेटेड मेमोरी को रिलीज करता था। सी प्लस प्लस में हमारे पास ऑपरेटर्स है, फंक्शंस नहीं है। ये फंक्शंस थे हाँ सी में। यहाँ हमारे पास दो अनरी ऑपरेटर्स है, न्यू एंड डिलीट। जिसमें से न्यू क्या करता है, मेमोरी अलोकेट करने का काम करता है, जबकि डिलीट वो जो डायनेमिकली अलोकेट की हुई मेमोरी है उसको रिलीज करने का काम करता है। Now see, an object can be created by new and destroyed by using delete। तो अगर एक बार आप न्यू से कोई ऑब्जेक्ट अलोकेट करते हो मेमोरी, तो आपको डिलीट यूज करके उसे रिलीज करना ही है एक्सप्लिसिटली, बिकॉज वो रिलीज नहीं होती उसके बिना, जब तक आप उसको डिलीट से रिलीज नहीं करते, डिलीट ऑपरेटर यूज करते। सो वट एवर यू क्रिएट विथ न्यू, यू मस्ट डिलीट इट विद द डिलीट, or release that space with the delete। Look at this new operator. New operator used to create the objects of any data type। You just have to write pointer variable is equals to new and then the data type। मतलब यहाँ आपको क्या होता है, जो न्यू ऑपरेटर है ना, ये एक पर्टिकुलर सफिशिएंट मेमोरी स्पेस अलोकेट करके इस टाइप डेटा टाइप की एक एड्रेस रिटर्न करता है, कि मैंने यहाँ से लेकर इस एड्रेस की मेमोरी अलोकेट की है इस वेरिएबल को। इसलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंटर वेरिएबल लिखना पड़ता है, क्योंकि वो एड्रेस रिटर्न करेगा ना, और एड्रेस कौन होल्ड करता है, पॉइंटर वेरिएबल। So whenever we use the new operator, we have to use the pointer variable along with it। See, new operator जो है, इससे क्या होगा कि वेरिएबल का लाइफ टाइम जो है वो बढ़ेगा। नाउ लाइफ टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ अंडर आवर कंट्रोल। जब तक हम उसको डिलीट से रिलीज नहीं करेंगे तब तक ये वेरिएबल का लाइफ टाइम चलते रहेगा। ओके, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिलीटेड। सो इसलिए हम न्यू ऑपरेटर यूज करेंगे। नहीं तो पहले कैसे होगा, बाय डिफॉल्ट जहां तक ब्लॉक चलेगा, ठीक है, ये जो आपका करली ब्रेसेस वाला ब्लॉक रहता है, ये जहां तक चलेगा वहीं तक उसका स्कोप रहेगा। लेकिन न्यू के साथ ऐसा नहीं होगा, जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते वो मेमोरी स्पेस रिलीज नहीं करेगा। द लाइफ टाइम इज अंडर आवर कंट्रोल एंड नॉट रिलेटेड टू द ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ। सी, इंट स्टार पी, अगर ये एक पॉइंटर वेरिएबल है तो पी इज इक्वल टू न्यू इंट लिख के मैंने क्या किया, एक सफिशिएंट मेमोरी स्पेस अलोकेट कर दी टू होल्ड द डेटा टाइप ऑफ इंट, and it will return the address which is being allocated to this object। See, we can assign the newly created object some value also। ये दोनों चीजें आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं with this line, int star p is equals to new int। You can assign the values to this pointer variables also। star p is equals to 25, star p is equals to 7.5। तो ये जो नया से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है int टाइप का, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये जो है ना, इसमें नाम नहीं रहेगा। यू कैन सी देयर इज नो नेम असाइन टू दिस int टाइप वेरिएबल और int टाइप ऑब्जेक्ट। इट इज जस्ट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड डायनामिकली, तो इट इज गोइंग टू बी एनोनिमस। यू आर जस्ट गोइंग टू रेफर इट विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। सी, वी कैन इनिशियलाइज दिस थिंग्स आल्सो इन वन स्टेटमेंट। ये सारी जो चीजें है ये एक लाइन में लिखी जा सकती है। int स्टार p इज इक्वल टू न्यू int ऑफ 25 is the time। We will just complete new, and in the next lecture we will see delete। New can be used to create a memory space for user defined data types also, like structures or arrays। See,
अगर मुझे अरे के लिए एलोकेट करना है न्यू की हेल्प से डायनेमिक मेमोरी, then I can do this. Int star p is equals to new int of 10. Remember guys, this is square bracket. In the previous case, this is a round bracket. Whenever you are assigning the value to this built-in types, sign like this. Whenever you are assigning it to the user defined data types like array, assign it like inside the square bracket. And how to access these variables? P of 0, P of 1, P of 2, P of 3, P of 4, P of 5, and so on. Now, we can also create dynamically the class objects. See, if this is a class sample and it is having some private data members, public member functions, then inside the main, अगर आपको new की help से इसके object को, इस class के object को memory allocate करनी है, तो आप कैसे करेंगे? Sample, क्योंकि इसका data type क्या हुआ? Sample. Class एक data type है ना, so sample star p is equals to new of sample. तो आपने क्या किया? एक new की help से इसके इस क्लास के ऑब्जेक्ट को सफिशिएंट मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दी। तो न्यू क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी कैलकुलेट करेगा और उतनी मेमोरी यहाँ असाइन करके उसका एड्रेस रिटर्न करेगा पी में। दिस इज द मीनिंग। सो आई वांट यू टू रिमेंबर एटलीस्ट दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ना यहाँ लिखा हुआ, व्हाट इज द एग्जैक्ट यूज ऑफ न्यू ऑपरेटर? It allocates sufficient memory space to hold the data object of that type and then returns the address. That's why on the left hand side we need someone to hold the address, and that is pointer variable. And this is the delete operator. Delete operator क्या करता है? जो न्यू से आपने क्रिएट किया उसकी मेमोरी स्पेस रिलीज करने का काम करता है, which is no longer needed. So delete, just write down the pointer variable. As just we have created the p and q in the above cases, so just write delete p, delete q. तो ये क्या कर देगा? p और q ने जो भी होल्ड किए हैं एड्रेसेस, वहां जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट और रिलीज हो जाएगा। You can also delete the array with this syntax. Either specify the size in the bracket, delete size pointer variable, or simply write delete bracket pointer variable. इससे क्या होगा? ये सिंटैक्स यूज करने में ज्यादा फायदा है क्योंकि यहाँ साइज आपको, you don't have to remember the size and it is going to delete everything which is pointed by the p. In standard C++, instead of null pointer, bad alloc exception will be thrown. अभी जरूरी नहीं कि जब भी आप न्यू की हेल्प से मेमोरी एलोकेट करते हो तो वहां मेमोरी स्पेस हो। तो इट मे बी हैपन दैट देयर इज नो मेमोरी स्पेस इन द फॉर दैट प्रोग्राम टू बी एलोकेटेड। इन सच केसेस सी में नल पॉइंटर रिटर्न होता है, लेकिन सी प्लस प्लस में एक बैड अलोक एक्सेप्शन रन होगा। एक्सेप्शन मतलब एक कोड है जो वो पर्टिकुलर एरर आने पे रन होता है। जस्ट कीप अ नोट ऑफ दिस थिंग and then we will see in the next lecture the manipulators. उसके बाद आपका कोई लेक्चर नहीं है, so just ask me the doubts. Mark your attendance. One more thing, don't don't leave the meet. Wait, don't leave the meet. If you have any doubts, just ask me. Otherwise, leave the meet. मैं आज की जो पीपीटी है वो स्ट्रीम पे अपलोड कर देंगे। Doubts, ask me, or otherwise you may leave the meet.
ma'am. Hello. Hello. Yes. Yes. मैम ये आज की पीपीटी स्ट्रीम पे अपलोड कर देंगे. शेयर होगी क्या? ठीक है. ओके मैम. Yes, Sagar sir. Hello. That's systems margin table. Systems problem. Oh,